Okay, so where were we in the last class? Liberal phase हो गया था ना? करें शुरू. Okay. So liberal phase कौन explain करेगा? क्या था liberal phase? राशि. What was liberal phase? गार्गी liberal phase. क्या था? मैम idea. So basically, liberal and extremist phase. Liberal phase is that phase where you are protecting your community, है ना? क्या कर रहे हो? You are being defensive towards your community. And extremist phase is when violence is included, when hatred is included, है ना? तो liberal phase में क्या हुआ था? ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया था, है ना? और सर सैयद अहमद खान who planted seeds for partition, है ना? फिर उसके बाद okay and ठीक है. Now write extremist phase. दे दो मुझे आवाज. दिया था. अच्छा हाँ, I'll give it to you tomorrow. ठीक है, थोड़ी ज्यादा में पूछता हूँ. After 1937 write down. हाँ, extremist. कौन सा आंसर? वो कल डिस्कस कर लो, आज डिस्कस कर लो. आफ्टर 1930 एक्सट्रीमिस्ट फेज नहीं. लिबरल इज लाइक यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर लाइक टारगेटिंग देम बट बाय लाइक नॉट वायलेंस, बट यू आर बीइंग जस्ट प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव हो रहे हो अपनी कम्युनिटी के लिए. जब डिफेंसिव है इट्स लिबरल, ठीक है. एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की तरफ जाता है. तो बेसिकली लिबरल में व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रही है, ठीक है, तो मुस्लिम लीडर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस, लाइक जिन्ना रियलाइज्ड. तो उन्होंने कुछ कुछ फॉर्मेशंस की, जैसे कि कॉलेज का फॉर्मेशन किया, आईएनसी में नहीं जाने दिया, उन्होंने अपनी लीग बनाई, अपनी पार्टी बनाई, ठीक है. तो दे वर बीइंग प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी, ठीक है. उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट में दे स्टार्टेड डिवाइडिंग, ठीक है. फिर उसके बाद पार्टीशन ही हो गया, ठीक है. राइट डाउन. After 1937, communalism entered a dangerous step.
1937, communalism entered a dangerous step. So basically, in extremists, there is like instead of peaceful negotiation, it turns into very, fear-based and extremist politics. Okay, dangerous stage or step. After 1937, communalism entered a dangerous step. The Muslim League under M.A. Jinnah claimed that Hindus and Muslims under M.A. Jinnah claimed that Hindus and Muslims were two different nations. Claimed that Hindu and Muslims were two different nations. So basically, Jinnah argued that Muslims are going to be suppressed. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अलग नेशन की मांग की. On the other side, write down. अब अगर एक कम्युनिटी उठी है तो देयर इज लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस कि दूसरी कम्युनिटी भी उठेगी. ठीक है, सो राइट डाउन. ऑन द अदर साइड, हिंदू कम्युनलिज्म आल्सो बिकेम एग्रेसिव. Hindu communalism also became aggressive. The Hindu Mahasabha and the Hindu Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS, Rashtriya Swayamsevak RSS demanded that non-Hindus adopt Hindu culture and values. Demanded that non-Hindus adopt Hindu culture and values. Demanded that non-Hindus adopt Hindu culture and values. Hindu culture and values. तो अगर ऐसी थिंकिंग आ रही है then it will lead towards violence. ठीक है, अब उसके consequences क्या होंगे? Write down. Calcutta killing of 1946. Consequences होंगे इसके. Calcutta killing of 1946. The Calcutta killing of 1946. Then write down. Finally, during partition, next slide. Finally, during partition in 1947, communal riots broke out across India. Communal riots broke out across India. Finally, during partition in 1947, communal riots broke out across India. Even Mahatma Gandhi, who fought against communal hatred, was assassinated in 1948. In 1948. Now it's understandable that pre-independence में because of British it happened, divide and rule. ठीक है? So basically they divided and the hatred was like obvious, like it was understood. But what happened after post-independence? जब एक बार partition हो चुका है, तो don't you think it was obvious कि communalism end हो जाना चाहिए था? But it still was there. Why? What was the reason? Like this is one incident, right? So imagine if this wouldn't have happened, तो उसके बाद भी क्या hatred रहता?
कम्युनलिज्म रहता। ओके, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लाइक दिस माइग्रेशन, कि जिन्हें यहाँ पे रहना है वो रह सकते हैं, इंडिया में जिन्हें हिंदू और मुस्लिम रहना है वो रह सकते हैं, ठीक है, और सेम गोज विद पाकिस्तान, राइट, बट मेजोरिटी लाइक मोर देन मेजोरिटी इन पाकिस्तान वाज मुस्लिम कम्युनिटी, राइट, और इंडिया में अभी भी कुछ हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, है ना। तो जब एक बार चीज प्लांट हो चुकी है, डिवीजन प्लांट हो चुका है, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू हैव दैट कम्युनिटी बैक, है ना। तो राइट डाउन पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन, like it's psychological community. बेसिकली डिवीजन सिर्फ कम्युनिटीज में नहीं हुआ था, सब डिविजन्स भी हुए थे, राइट। तो एकजुट करना वापस से एज अ कम्युनिटी, एज अ इंडियन कम्युनिटी इज वेरी लाइक डेंजरस, ठीक है। तो मुस्लिम में भी सब डिविजन था उस टाइम पर, और हिंदूज में तो था ही, वो स्टार्टिंग से वेदास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हेट्रेड वो कहीं ना कहीं पहले से आता जा रहा है हमारे पास। हाँ एग्जैक्टली, राइट डाउन पोस्ट इंडिपेंडेंस, post independence evolution of communalism in India, post independence evolution of communalism in India. Are you guys reading NCERT? नहीं, शुरू नहीं करना है, खत्म करना है उसको जल्दी पढ़ के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू। हाँ हाँ, सोशियो की एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग इट। नहीं, पहले सोशियो वाला पढ़ लीजिए। सी सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है विच इज आउट ऑफ द सिलेबस एंड आउट ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट यू हैवंट। ठीक है, इफ यू फील सो, ठीक है, बट यू कैन रीड साइड बाय साइड, बहुत छोटा सा एनसीईआरटी है, like it will hardly take you month for this. हाँ 11 12 अगर 6 से पढ़ सकते हो then it's very good, but if you are like you cannot read much तो 11 12 is must. Now I cannot define that sufficient because I haven't seen those notes, but if they are sufficient for you then it's good. Again, I haven't seen that book. Okay, basically if you understand this psychologically, like this partition, so like this division is arising back then, like वेदा से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हिंदूज में है एंड मुस्लिम में भी है, सुन्नी वगैरह को लेकर के, ठीक है। तो जब एक बार डिवीजन हो जाता है बिटवीन कम्युनिटीज तो सब डिविजन्स भी होते हैं, तो हमारे केस में यही हुआ था, हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ वर लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो हमारे यहाँ बीच में जो कम्युनिटी के बीच में जो डिवीजन हुआ था, कास्ट के बीच में भी होने लगा था एंड इट वाज स्प्रेडिंग, उसका एग्जाम। बट पाकिस्तान में लाइक अभी भी आपको यूनिटी देखने को मिल रही है ना, बट व्हेन इट कम टू इंडिया, हमारे यहाँ पे ज्यादा है, क्यों, रिलीजियस डिफरेंट बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी ज्यादा रहती है, पाकिस्तान में इतना डिवीजन नहीं है। जी, हिंदूज माइग्रेट हुए थे, बट अगेन दे वर असैसिनेटेड, दे वर किल्ड, ठीक है, एंड दे वर सेंट बैक, ठीक है, जैसे कश्मीर का एग्जांपल हमारे पास है। हाँ एग्जैक्टली, दे चेंज देयर रिलीजन, हाँ मोस्ट ऑफ देम। ओके, जो यहाँ से गए थे लाइक मेजोरिटी ऑफ देम चेंज देयर रिलीजन्स, या तो उन्हें भेज दिया गया वापस से, या उन्हें मार दिया गया, या फिर रिलीजन चेंज कर दिया, दे हैड दिस ऑप्शन। हाँ पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान। ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ
Okay. What was the last word? RSS. Okay. Next, write down the end of British colonialism. The end of British colonialism. In 1947 was expected to end communal division. Since colonial policies were often to end communal divisions, since colonial policies were often blamed blamed for the rise of such conflicts. For the rise of such conflicts. However, independence, however, independence did not automatically bring communal harmony. However, independence did not automatically bring communal harmony. However, independence did not automatically bring communal harmony. Please read more and be present in the class when I'm dictating. And you are grown enough to summarize these sentences yourself. However, independence did not automatically bring communal harmony. Communal harmony. So there were several factors that contributed to this practice. So write down several factors. First is slow economic development. Now if we have limited resources, ठीक है, economy development नहीं हो रही है, so it's obvious that differences will be there. क्यों होंगे differences community में? Divide नहीं होंगे, ठीक है, write down. Widespread poverty meant that different communities widespread poverty meant that different communities meant that different communities often completed for that different communities often completed for limited resources such as jobs, education and land. इसकी COMPETED. Okay, if this is arising तो self deprivation का feeling आएगी, ठीक है. What is self deprivation? Self deprivation. Okay, and relative deprivation? Self का थोड़ा तेज बोलो so that you can hear. ठीक है, what is relative deprivation? So basically when you are thinking कि हमें neglect किया जा रहा है, ठीक है, other community को ज्यादा ऊपर उठाया जा रहा है और हमें neglect किया जा रहा है. Write down. Relative deprivation लिखो RELATIVE
R DEPRIVATION. सेकंड, नहीं, रिलेटिव डेप्रिवेशन. आई वांटेड टू नो कि तुम्हें पता है नहीं, इसलिए मैंने सेल्फ का बताया. हाँ, व्हेन यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी. हाँ. नेक्स्ट, सेकंड, इंडिया failed to fully achieve a cultural synthesis. ओके, इंडिया के पास बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है. सॉरी. तो बेसिकली इंडिया के पास बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, राइट. बट आज भी क्या आपको लगता है दैट वी आर मैनेजिंग देम एफिशिएंटली? क्यों? हम्म. समवन एल्स. ओके. सो बेसिकली ये एक चीज कंपेयर करना कि हमारे इंडिया में तो इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, एंड वी आर लिविंग टुगेदर, बट एट व्हाट स्टेक? वायलेंस इज स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है. यूनिटी इज नॉट देयर. हम आज भी न्यूज में देख रहे होते हैं, वरना इतने करंट अफेयर्स हम लिख नहीं रहे होते, ठीक है. Exactly. So justifying this that we have so many culture and languages and we are still existing together as a unity, वो चीज justify नहीं करता इन violences को, ठीक है. And we should consider it also. So write down what synthesis, where one group perceived what was the last word? Among its diverse religious groups. While the Constitution guaranteed secularism, social realities often reflected mistrust. Guaranteed secularism, social realities often reflected mistrust. Write down third point. गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? लग रही है? पीछे बैठ जाओ. Third, regional and social imbalance in development. Regional and social imbalance in development. Then there are few incidents that you have to write down. Political mobilization क्या होता है? I've explained this in class. You're doing political science, right? Completed graduation. From? Encouraging how? And coming out with new schemes on the basis of community. Good. Write down political mobilization. The growth of democracy
brought representation to the growth of democracy, brought representation to different communities. The growth of democracy brought representation to different communities. Online students, I hope that you are writing and not missing any pointer. Of democracy brought representation to different communities, but it also allowed but it also allowed political parties to exploit religion for electoral gains. Next line. Leaders often used religious sentiments as a shortcut to gather mass support. Sentiments as a shortcut to gather mass support. You wrote together, right? You guys don't read when you write, do you? Okay, write major incidents. First one is anti-Sikh riots, 1984. Anti-Sikh riots, 1984. Anti-Sikh. Yes. Should I explain it? Make you write it? Yeah, likh lo. Anti-Sikh riots, sir. Sir, anti-Sikh riots. Loud. And what was the community of bodyguard? Mention this in the answer. इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी बाय हाँ अब समझ में आया हाँ आफ्टर उसके बाद कम्युनिटी डिफरेंसेस क्रिएट कैसे हुए क्योंकि वो जो बॉडीगार्ड था सिख था ठीक है तो द होल सिख कम्युनिटी वाज टारगेटेड तो वहां पे लड़ाई हुई थी वो वायलेंस हुआ था जी राइट डाउन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was assassinated by her Sikh bodyguard. Large scale violence assassinated by her Sikh bodyguard. Large scale violence broke out against Sikhs, particularly in Delhi. Write down second one, exodus of Kashmir Pandits. Exodus, EXODUS. So exodus means when there is huge migration. 1989 to 1990. So in Kashmir, separatist movement was going on. ठीक है
तो वहां पे जितने भी कश्मीरी पंडित या फिर हिंदूज थे उन सबको हटा दिया गया था, या तो उनका रिलीजन चेंज करा दिया गया, या फिर उन्हें मार दिया गया, या फिर माइग्रेट करा दिया गया। ठीक है, राइट डाउन। मेनी पीपल वर किल्ड। ओके। एंड थाउजेंड्स फ्लेड द वैली। Thousands fled the valley, leading to one of the largest, leading to one of the largest cases of, largest cases of internal displacement, largest cases of internal displacement due to communal violence, due to communal violence. Aditya, Bhavya, Palak, Shalini, Sukriti, online students. Next, write down Babri Masjid demolition, 1992. Babri Masjid demolition, 1992. Write down on 6 December 1992, the Babri Masjid in Ayodhya was demolished by car sevaks, demolished by car sevaks, KAR. Who claimed it was built at, who claimed it was built at the birthplace of Lord Ram. Built at the birthplace of Lord Ram. उसके बाद recent current affairs लिखो। अगर 5 लिखवा रही हूँ 2 लिख कर आना। लिखो फर्स्ट वन 2013 मुजफ्फरनगर रायट्स, in Uttar Pradesh, triggered by a local conflict, triggered by a local conflict, resulted in conflict, resulted in massive displacement of Muslims, massive displacements of Muslims. Second, 2019 CAA NRC protest, CAA NRC protest. ये जो मैं लिखवा रही हूँ कल इनको ना पढ़ के आना प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन इट टू मी. CAA NRC protest. Third, in 2020 Delhi riots during the anti-CAA protest turned violent. Anti-CAA protest turned violent. मणिपुर 2023. इतना ही बोलूंगी फिर उसके बाद लिख के आना. पॉलिटिकल हो जाएगा. हाँ, बट एथिकल और कम्युनल क्लैशेस तो हुए थे ना उसमें.
So divisions, this subdivision, won't it lead to something bigger? Next, Ram Mandir verdict 2019. कब इनॉग्रेशन हुआ है राम मंदिर का? गुड, जनवरी का. राइट डाउन नेक्स्ट. रीड इट आउट, मैंने तभी सिर्फ लिखवाया है. क्लास के बाद. आई हैव टू फिनिश दिस टुडे, बहुत लेट चल रहा है. ओके, राइट डाउन. Issues regarding communalism. कुछ कुछ इश्यूज हैं, ठीक है. आई एम मेकिंग यू राइट. अगर इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो तो गुड. ओके, देयर इज हाडिया केस 2017 और लव और जिहाद डिबेट, ठीक है. हाडिया केस. राइट डाउन. तो बेसिकली एक लड़की थी 24 साल की एंड शी वाज मैरिड टू अ मुस्लिम गाय, और फिर उसके बाद उसने अपना धर्म चेंज करा लिया था एंड टू दिस हिज फादर फाइल्ड अ पिटीशन, ठीक है. और फिर उसके बेसिस पे लोअर कोर्ट ने उस चीज को, मतलब उसकी शादी को खारिज कर दिया गया. बट फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अपील किया गया तो उसके बाद वैलिडेशन मिल गई थी उसकी शादी, ठीक है. राइट डाउन. हाडिया की 2017 एंड लव जिहाद डिबेट. जी. हाँ, लव मैरिज उसके लिए हुई ना, पेरेंट्स के लिए नहीं हुई ना. दे डिडंट एक्सेप्ट. क्या मानना नहीं चाहिए था? उसके बाद वो खुद भी एज अ सोशल सोसाइटी में जो इंसान सोचता है और वो बोलता है और वो करता है. अच्छा, you are saying that if she is married then they have like no right to intervene. I think I just read few days back, अभी बिहार का इंसिडेंट है. I don't know exactly, ऐसे बहुत चलते हुए न्यूज देखी थी मैंने. A father killed a boy. उसने अपनी लड़की की शादी. अच्छा, अभी सुना है ना, कहाँ से है वो? हाँ. उसके पापा जब ये लोग शादी कर लिए, उसके बाद इसके पापा बोले कि चलो आई एक्सेप्ट, और अचानक से पेपर देने जा रहे हैं और एंट्री गिफ्ट भी कोई लड़की. Do you think Bollywood or any party is actually influencing these things? Explain. कैसे? So there was this movie ना, हीरोपंती, है ना? Like more than half of the movie, like it wasn't towards love jihad but against love marriages, ठीक है. और वहां पे बहुत दिखाया हुआ कि कम्युनिटी में ही शादी करनी है. And also there was this another movie, धड़क. हाँ. What secret WhatsApp group?
अच्छा वो and it's on WhatsApp. मूवी का कनेक्शन बेसिकली दे आर कनेक्टेड विद बीजेपी कि अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट वो है, हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, तो बेसिकली दे आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स दैट. We are not linking movie towards BJP or any party. We are just saying in general that how movie are exploiting our thinking. Yeah, understood. Okay, so कुछ कहना है? What he did? Let's move. मेरा माइक लगा हुआ है यहाँ पर. अच्छा, what were you saying? Like पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए शादी के बाद. देन अगर हमारे घर वाले पहले तो हम ही होते हैं, ठीक है, उसका और पूरा नाम ऐसा नहीं है. तो मतलब वो अगर भाई यही चाहते हैं तो उनके फादर को कोई दिक्कत नहीं है. किससे मतलब उनकी डॉटर ने दिक्कत थी. शी चेंज हर रिलीजन, ठीक है, वो मुस्लिम बन गई तो उसके पेरेंट्स को दिक्कत थी. उनकी ये दिक्कत थी दोनों से दिक्कत. और वो लेट गो भी लाइक फुली दे लेट गो, ठीक है. हाँ, एग्जैक्टली. एंड ऑल दिस इज लिंक्ड टू पेट्रियार्कल सोसाइटी. There are many cases. हर रोज में 20-20 केसेस आते हैं. Okay, come back from suitcase, fridge, and cans. Are you really going to write these in current affairs? Okay, next, write down. Feels like I'm sitting with serial killers. उत्तराखंड में like is there someone who is living in उत्तराखंड? तो क्या changes हुए हैं उसके बाद? Like ऐसे ground reality I want to know. वो news वाला नहीं, like reality. But like have you heard कि एक दो incident? So is this strictness because
these cases are actually rising or are seen. Like, so like, did you hear any case which is very close to you? You did? That's very close. हाँ. I won't give any my point. जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना? It's compulsory. What if owner is known then? Loophole again. Now imagine we are so much into our culture. क्या यहाँ पे दिल्ली में कौन टेररिस्ट रह रहा है हमारे साथ में? We are not caring about that. But we are actually into कि लड़का लड़की के साथ रह रहे हैं नहीं, किस कम्युनिटी के साथ रह रहा है. This we are afraid of. But हाँ, exactly. And especially when it comes to bachelors, they see more. So a woman who is brainwashed by patriarchal society is much dangerous than a man who is like who gave birth to patriarchal society. और ये बहुत बड़ा इशू है इंडियन सोसाइटी का. A woman who is brainwashed by patriarchal society, especially like वो औरतें जो औरतों की दुश्मन है, who is actually going towards this patriarchal society, who is uprising, who is helping people. ठीक है? Men are the one who gave this birth. चलो, काफी डिस्कशन हो गया. Write down what was the last word. हाँ, हाँ मैं लिखवा देती थोड़ा सा. क्या पता नहीं चलता इंस्टाग्राम से. क्वेश्चन तो बताओ. Social media is not a good place to search for truth. ठीक है? हाँ, but how will you verify? Like Instagram is not trustworthy. X is not a place to be in क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही dangerous है. Yes. क्या क्या हुआ? सुन लो, she is saying something about communalism.
क्या? अच्छा, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन नहीं हो गया इन चीजों में? लव जिहाद का ओके, क्या मानते हैं? बट डू यू थिंक इट्स एग्जिस्टिंग? Like there are certain proofs of it. There are cases, अभी recent cases है. I'll tell you after the class. Okay, write down. It became one of the most debated. तुम लोगों को मजा आता है ना सीरियल किलर वाली जैसी बातें करने में? It became one of the most debated incidents, but lot has changed. ठीक है, 3-4 साल में. पहले यूपी में वायलेंस आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज. बहुत वायलेंस था वहां पे. हाँ, मतलब वहां पे दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते थे. बट नाउ इट्स अ बिट सेटल्ड. हाँ, बिहार में तो अभी भी है. हाँ, ऑब्वियसली. कहाँ से? Now imagine how scary our society is. Like before, like 2 days back, we were discussing about caste, ठीक है? And now today we are discussing about politics. Ground reality इतनी ज़्यादा scary है. So it's like this division is occurring in steps. ठीक है? और वो ज़्यादा जितना अंदर हम घुसते जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो scary होता जा रहा है. So like if we are talking, हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे बात करते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं कि वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, वी आर लाइक विद सो मेनी कम्युनिटीज, हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं. बट जब उसके बाद आप एक एकेडमी में आते हो और उसके बाद डिस्कस करते हो करंट अफेयर्स एंड इट बिकम्स वेरी स्केरी टू इवन थिंक अबाउट इट. Yes. So all this is like psychologically related. How we are taught, what we are taught. Exactly. People we are living with. Exactly. Write down. One of the most debated incident around communalism and religious freedom. So basically, this Hadia, whatever name, like I cannot pronounce it. Basically, her name was Akhila. Okay. So write down a 24-year-old Hindu, a 24-year-old Hindu converted to Islam and married a Muslim man. Father filed a petition and married a Muslim man. Father filed a petition labeled as love jihad. बहुत short में pointers में बता रही हूँ. Labeled as love jihad. Kerala High Court annulled her marriage. Now imagine that you are going to a High Court. और वो ही communalism दिखा दे आपको. Labeled as love jihad. Kerala High Court. Okay, any like court decision which made you very like doubt on the jurisdiction, on the law. Not communalism, like any case. इसके तो बहुत सारे केसेस हैं.
except this. Like when it comes to women, there are like many cases that they have said, especially about rape, okay, and dowry also. Apart from this, हम्म, किसी कोर्ट ने हाँ, इसमें तो बहुत सारे आते रहते हैं. Good, very good. They start to defame one community क्योंकि उसने हाथ में कलावा पहना हुआ था. Okay. Which case? कहाँ पे था ये? कौन सा वाला? निर्भया वाला? ओके, निर्भया केस. हाँ हाँ, उस पे तो बहुत सारे वर्डिक्ट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के भी, और बहुत सारे जजेस ने अगेंस्ट दिया था निर्भया केस. अच्छा, ओके, वन ऑफ यू रिमाइंड मी थ्रू माय मेल आईडी कि मुझे जो है करंट अफेयर्स लेके आने हैं, जो रिसेंट जजेस ने जो वर्डिक्ट दिया है किसी भी इंसिडेंट पे. ठीक है, कौन मेल करेगा? किसको याद रहता है? क्योंकि मैं भूल जाऊंगी. मैं सब भुलक्कड़ हो गया तुमने. गार की क्यों मेल में? विच वन? राइट डाउन जल्दी, 3 रहते हैं, फटाफट. द केरला हाई कोर्ट annulled her marriage. Annulled her marriage, saying she was vulnerable. Later, Supreme Court restored her right to choose both her religion and partner. Okay, did you guys like hear about Ghar Wapsi program? सुना है? I know you have heard. हाँ, घर वापसी program. What is it? हाँ, so basically जैसे लव जिहाद है, ठीक है? Parth, what's your doubt? I couldn't understand. Can you please write again? Parth. Okay. पहले लिखो beef politics and lynching cases. Beef politics and lynching cases. जी. Debate around cow protection and beef consumption has often take communal terms. Cow protection and beef consumption has often taken communal turns. So there are like multiple
incidents where this was seen. ठीक है? हाँ खाते बट इट्स बैन. ऐसे तो लाइक यूपी में ओपनली शॉप्स खुली रहती थी, बट अभी देखने को कम मिलेंगी हैं, बट कम मिलेंगी. Exactly. ड्रग्स की बात हो रही है. Between 2010 and 2017, over 60 incidents of mob violence between 2010 and 2017. Over 60 incidents of mob violence were reported. 60 of mob violence were reported. So these are the incidents which were reported. आधे तो report भी नहीं होते. Write down. Muslims were targeted in 51%. Muslims were targeted in 51% of such attacks. Were target in 51% of such attacks, and made up 86% of deaths. And made up 86% of deaths. Then घर वापसी का is your homework. Very happily, ma'am. मना नहीं, मैंने बोला नहीं है कि बुक्स बंद कर दो. I'm still dictating. 15 तक होती है क्लास. अभी 5 मिनट. We'll finish this. अच्छा, you get break in between. Sorry, I didn't know. कौन सा क्या दोबारा? According to which data? Times of India. अच्छा. हाँ ठीक है, you can mention it. हाँ 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 हाँ. I'll be in the faculty. अच्छा, तो I like took your class for like 9:15, 17 sometimes. तो तुम्हारा ब्रेक खत्म हो जाता है?